Hi everyone, good morning, Sat Shri Akal, Ram Ram. Today's session or talk, it's not going to be a very academic session or so. We're going to be discussing a philosophy, we're going to be discussing some points, we're going to be setting the perspective right, we're going to refresh our perspective in fact. So, we're going to be talking about 5 common mistakes in reading comprehension. So before I move ahead, let me ask you all, uh, is the audio video all good? Thank you very much. Yes. So, are you a beginner preparing for CAT 21, IPMAT 22, or you've been preparing for good time now? So you call yourself, an achiever. You call yourself a beginner. That's absolutely okay. This session is for everyone. If you're a beginner, let's talk a little about RC with you. If you've been, practicing for good time now, it's absolutely okay because this session will get your perspective correct. Okay, so I'll make it very clear. I'm not gonna teach you any topic today. No, we're not talking about types of questions and how to get hold of RCs in 5 quick ways or something. No, it is a purely a fundamental session which talks about usually 5 fundamental mistakes students make when it comes to reading comprehensions. Well, I introduce myself. I'm Gaurav Sharma. I'm an Alumnus IIM Calcutta. I've been mentoring students for more than a decade now. Uh, when it comes to online teaching now, we cannot actually calculate the number and everything, but yes, more than 25, 30,000 students have already taught. And I'm a published author. So, from the author's perspective, I can still tell you about a lot of things. So, Chisel is the book I wrote, and you can always find it on Amazon, on different platforms. The Kindle version is also there. Hey Lakshay, hello, hi. Well, so let's move ahead and see if you talk about understanding RCs and going for types of questions and everything. Obviously, on YouTube on this channel, we're going to be, I'm going to be starting my, a batch, for beginners right from A, B, C, D, right from the beginning. We're going to start a batch. Otherwise, for structured preparation, Unacademy is already, offering you the batches for IPMAT 22. Yes, for IPMAT, DUJIT, NPAT, SET. Start preparing now. What are we waiting for? And then, at the same time, when we know that July is the time where it's pouring all around. So obviously, the offers, for example, you can pick up a course for 12 months and which is going to give you, 2 months extra. Features, if you talk about the subscription, live interactive sessions, and every fourth session is a doubt solving session. The recorded sessions you can watch anytime. You have the notes from all educators at one place, and mind you, the best of trainers, the best of educators you will find at Unacademy. Well, this is the fee structure you can always pick up. And at the same time, 2 suggestions as an educator, as a mentor. One is to go for long term, and second, you can use my code, which is GSMBA. Yes, so my students who like me, they call me GS. It's a very common name I have, Gaurav Sharma. So you can use this code and it will give you 10% additional benefit, though the fees is already cost effective. Well, when do I teach on Unacademy app? When do I teach, when am I starting my YouTube, classes for beginners and everything? All this info, थोड़ी सी बातें, कुछ अच्छी सी काम की बातें, कुछ प्यार भरी बातें. For all that, this is my Telegram group. So you guys can join me here on Gaurav Sharma GS. This is the link and you can find it in the description as well. Chaliye. So should we start talking about mistakes? So the first fundamental mistake a student does when it comes to reading comprehension. So number one, if you're a beginner, I'm sure you know that RCs, reading comprehensions, are those passages. No, they're not unseen passages. हाँ देखे तो नहीं है पहले, बट वो जो जिस थॉट के साथ, जिस पर्सपेक्टिव के साथ वो 12th स्टैंडर्ड में अनसीन पैसेजेस करते थे, ये वो नहीं है. इट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यू नीड टू रीड एंड यू कॉम्प्रिहेंड. कॉम्प्रिहेंड मतलब बोले तो समझ में तो आना चाहिए लिखा क्या है, कहना क्या चाहते हैं, मेन आइडिया है क्या, थीम क्या है पॉइंट की, फिर उसमें supporting details and everything. It is very reading comprehension. So you read, you comprehend, and then there are questions based on that reading comprehension. So to begin with this, mistake one what a student makes, that is
disliking reading comprehension. That's the first thing. I don't know how do you afford to dislike this. Why? Out of 3 sections, if we talk about language section is one, we call it 33 to 40% weightage, right? Out of this 33 to 40% weightage of the entire examination, 50% is RC, reading comprehension. That makes almost 20% of the entire entrance exam. It is reading comprehension. Can you afford to dislike? देखो mind ही best, what's the best thing about your mind, your brain, that is it is trainable. So if you tell yourself again and again that you don't like reading, you cannot comprehend, your vocabulary is weak, you do not want to, you don't prefer reading comprehensions, the mind will learn that. Otherwise, I tell you something very simple. There's no concept. You just need to read and understand what is written. And based on that, the questions are there. अगर यार पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में किसी चीज़ को कहीं खो दें हम लोग, तो ढूंढेंगे थोड़ा मुश्किल होगा. पर अगर मैं बताऊं कि कोई चीज़ है वो यहाँ खो गई है, इस रूम में, इस हॉल में, इस घर में, इस कॉर्नर में, तो आसान होगा ना. वही तो है. क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब सारे के सारे पैसेज में हैं. तो आज से एक शिफ्ट करना है. वन माइंडसेट हैज टू बी शिफ्टेड, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन is easy and I like it. I like to read. If you do not read, you won't get that thought, to process it, the intellect, the food, right? So that's mistake one. So stop disliking it, start liking it, start loving it. It is beyond your IPMAT. It is beyond that. Okay? It's going to give you a lot of knowledge. So students do what? They unconsciously start avoiding it. They do not realize that 20% of the entire reading comprehension is what? 20% of the entire paper is reading comprehension. तो अवॉइड करने से कुछ फायदा नहीं होगा. अब अवॉइड करने लगोगे वो बैक सीट ले लेगा और एक ऐसी वीकनेस बन जाएगा जो अनएड्रेस्ड रह जाएगा. और एक बार अनएड्रेस्ड रह गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो एक्लिस हील बन जाएगा. हाँ, कल वो प्लस क्लास में इन द सब्सक्रिप्शन क्लास वी वर डिस्कसिंग दिस एक्लिस हील. एक्लिस हील क्या होता है? द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ एनीबॉडी. Hi Arnav, गुड मॉर्निंग अद्विति, टू यू टू. तो ज़रा ध्यान दें, अभी तो पहली मिस्टेक ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो एक एक्लिस हील का मतलब ही क्या होता है? एक्लिस हील इज अ मिथिकल वर्ड. एक्लिस हील मतलब वीकेस्ट पॉइंट, मोस्ट वल्नरेबल एरिया. तो 20% अगर पूरे पेपर का कोई ऐसा हिस्सा 20% रखता हो वेटेज और वो अपना वीकनेस बन गया, कैन यू इमेजिन विदाउट clearing that 20%, you can clear the written round, the first round, for IPM Indore or for Rohtak? No, it is not possible only. Okay? So ultimately the weakness, will become the biggest weakness. Okay? चलिए, अब आती है mistake 2. Now, a lot of students, come and ask, sir, grammar के direct questions नहीं आएंगे, तो grammar छोड़ ही देते हैं. भाई ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पहले तो किसी ने कहा नहीं है ऐसा. नंबर 1. नंबर 2, द सिलेबस टॉक्स अबाउट यू हैव टू हैव वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाई. अब किस तरह के क्वेश्चन है, नोबडी हैज सेड. बट नंबर 3, मान लेता हूं कि ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इफ यू स्टार्ट इग्नोरिंग ग्रामर, structural, okay, it is basically structural grammar. I am not asking you to get into active, passive or direct, indirect or something. No, it is not expected. What you're supposed to get into, that is structural grammar. What is structural grammar? Subject verb agreement, modifiers, parallel construction. Parallel construction क्या है? Sentence has to be constructed in a parallel way, like all parts of speech. दो adverb आ रहे हैं, दो adjective आ रहे हैं, दो verb आ रहे हैं, they all have to be in same form. मुश्किल है समझना. पैरलिज्म का पूरा टॉपिक मेरी प्लेलिस्ट में है, अगर टाइम हो तो देख लेना, नहीं तो फिर से बिगनर बैच शुरू करेंगे तो पढ़ाएंगे. मॉडिफायर्स क्या होते हैं? आई सॉ और लेट्स से आई रेड, okay, I read that a player was injured in the newspaper. I read that a player was injured in the newspaper. ये IPMAT 2020 है. हाँ, ये बिल्कुल IPMAT 22 ही है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, अहमद. हाँ, तो आई रेड दैट अ प्लेयर वाज इंजर्ड इन द न्यूज़पेपर. प्लेयर इंजर्ड न्यूज़पेपर में थोड़ी हुआ. आई रेड that a player was in that I read where in the newspaper what that a player was injured. So this is called modifier.
स्ट्रक्चरल ग्रामर अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी वीक रहेगा. ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर स्टूडेंट्स में. Don't get into deep terminology of grammar or deep rooted concepts and everything. No, it's simple. बहुत सिंपल से चीज़ कहता हूँ, अगर पूरे साल में 6 घंटे भी ग्रामर को देखे, ठीक से अगर पढ़ के समझ लोगे, दिस स्ट्रक्चरल ग्रामर विल हेल्प यू टू कॉम्प्रिहेंड बेटर, बिकॉज this will give you everything that you need to become a quicker and better reader. Just 6 hours. Leave it on me. If you if you join hands, ये 6 घंटे में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या होगा, वो मैं पढ़ा दूंगा. आपको बस उसको फिर रिवाइज करते रहना है, याद रखना है. That's it. That will help you in developing better comprehension. Okay? Now, what's mistake 3? This is the most fundamental one. Mistake third is, ये जो YouTube पे खिलाड़ियों की खिलाड़ी टाइप वीडियो नहीं आते, कातिलों की कातिल, ऐसा थंबनेल में लिखा होता है कि 5 मिनट में 5 ट्रिक्स और उसके बाद RC 100%, ऐसा IM निकाल दो और IPM कोर्स एंड एवरीथिंग. टिप्स और ट्रिक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम नहीं करती हैं गाइज. Always on the lookout for some secret code that might help unlock the mysteries of RC. It doesn't exist. There is no secret code. There is no quick fix. There is no painkiller. There is no painkiller. This is a gradual improvement. Very gradual improvement. धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा, धीरे धीरे वोकैब बढ़ेगी, धीरे धीरे रीडिंग से अफिनिटी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तब जाके डेवलप होना शुरू होगा. कोई ट्रिक्स काम नहीं करती हैं आरसी में. Instead, if you find a good source, a good mentor, and learn from them, that's important, which is going to go gradual, step by step. If you think, picking up some trick and it'll, some kind of a thing, see, for example, there is some, a topic, let's say algebra, okay? Now, algebra has certain formulas or something. Again, we need a good mentor, and the mentor will teach you certain formulas and everything. After that, based on that formula, you can still expect 100% accuracy. But here, there's no formula. It is simple. Reading है, comprehension है. समझ में आ रहा है लिखा क्या है? अगर समझ में आ रहा है, सब हो जाएगा. Okay? चलिए. Now, do not waste time by studying from material that adds little value to your RC preparation. When you go onto the internet and you start typing reading comprehension for IPMAT, reading comprehension for SAT, reading comprehension for CAT, so much is available, but picking up what on what, okay, X over V, Y or Y over Z, this is the biggest task, and that is where you need the right mentors to teach you that what exactly to be read. You solve, let's say for example, a very simple thing I tell you, you stop reading and you start solving passages. A lot of students come to me and they ask me, sir, कि मैं reading करता ही नहीं हूँ, मैं तो reading के 2 passage solve कर लेता हूँ, अपने अब reading भी हो गई, passage भी solve हो गया. When you solve a passage, your mind is going towards aiming questions. When you read, it is just read for your leisure, just read for your pleasure, just read for your knowledge. Then you'll see the difference while solving RCs. Otherwise, solving RCs would not make any sense, right? Now, what would be mistake 4? Now, mistake 4 तो बड़ी amazing सी चीज़ है. Impatience. काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, सर मेरे को 15 डेज हो गए सर पढ़ाई करते हुए, सर अभी तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ, सर अभी तो मुझे 2 मंथ्स हो गए रीडिंग करते हुए, शुरू में तो हो गया था, उसके बाद रुक गया. VARC लैंग्वेज सेक्शन डेवलप्स, ऐसा सर्कल मानो, हाँ, ऐसा मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये आप हो, ये आपका लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है. इस सर्कल का जो रेडियस है ना, ये रेडियस धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा पूरे चारों तरफ, फिर ये रेडियस और बढ़ेगा, फिर ये ऐसे चारों तरफ बढ़ेगा. तो धीरे धीरे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है VARC में. सोच के देखो, अगर आपने 500 वर्ड्स लर्न कर लिए, मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ वो कैप के, और वो 5 क्वेश्चन वो कैप के जो थे, उसमें उन 500 वर्ड्स जो आपने लर्न किए थे कुछ भी नहीं था, स्कोर माइट बी 0. एंड ऑल 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दोस 500 वर्ड्स, स्कोर इज 5 on 5. तो लैंग्वेज का कोई सिलेबस तो है नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स करने हैं, रीडिंग करनी है, किस तरह की रीडिंग करनी है, कौन से तरह के नॉवेल्स करने होंगे, कौन से तरह के आर्टिकल्स करने होंगे, ऐसा तो नहीं है दैट दीज 100 आर्टिकल्स टू बी रेड, दीज 1000 आर्टिकल्स टू बी रेड, नो. तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही हो सकता है, इम्पेशेंस से काम नहीं चलेगा. तो क्या ध्यान देना है? Much of the weakness in RC can be attributed to the student's temperament. A lot of students do not read RCs properly.
जल्दी जल्दी पढ़ के क्वेश्चंस पे टाइम लगाते हैं। जब आरसी ठीक से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आरसी में बहुत सारा टाइम लगा दिया, प्रेशर आ गया, क्वेश्चंस में टाइम नहीं देते। तो बहुत सारा वीकनेस तो आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट है कैसा, आपका एटीट्यूड कैसा है आरसीज को लेके। Understand that fitting in the right formula is not the case with RC. I've already talked about it. There is no formula. I just need to read, start comprehending. That's it. Search for the right area where you might have some reference, evidence, discussion on the subject matter asked in the question. Read it again with me. Search for the right area where you might have some reference, evidence, discussion on the subject matter asked in the question. So that is just going for locations of what all being discussed in the RC. That also will not help if you do not get what exactly the main idea of reading comprehension in one word or in one sentence. Again, that will take time based on your knowledge and everything. Now do all the reasoning and comparison to arrive at the right answer. ऐसा धीरे 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 करके हम right answer पे पहुंचते हैं. Okay. Now what would be mistake 5? Now mistake 5 is taking the wrong way. Now, what is the wrong way? Now, understand. Approach to RC is fundamentally flawed. काफी सारे students, when after my experience and after talking to a lot of students, what do? Sir, मैं पहले questions पढ़ता हूँ, फिर I go back to the passage and I start searching for those answers. भाई ऐसा क्यों करते हो? सर ऐसा ही था सर, 12th में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता, सर मेरे तो 10 on 10 आते थे, 12th में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता था। हाँ सर, वो अनसीन पैसेज आता था, उसमें भी पैसेज होता था, क्वेश्चन होते थे, तो क्या करते थे तुम? तो सर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, देन आई यूज्ड टू सर्च इन द पैराग्राफ, तो वो मिल जाता था आंसर। अच्छा, अब इसमें भी सर मैं वही करता हूँ, बट फर्स्ट क्वेश्चन तो था व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, अब ये तो कहीं नहीं लिख रहा पैसेज में। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर व्हाइल राइटिंग द पैसेज, वो भी नहीं लिख रहा कहीं पे भी, अब वो तो समझ के करना पड़ेगा। या फिर पूछा जाए व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, द अप्रोप्रिएट टाइटल इज बेस्ड ऑन द मेन आइडिया, द थीम ऑफ द पैसेज। नाउ हाउ दिस अप्रोच वुड वर्क? Yes or no? If I, then some students say, sir, I quickly read the paragraph, quickly read the passage, and then I go to the questions, and then I come back and start searching. उनको लगता है उन्होंने पहले पैसेज को बहुत जल्दी से पढ़ के ना ऐसा बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ है दोस्तों, कोई फायदा नहीं हुआ। The balance between right amount of time given to reading and right amount of time given to students. कई बार स्टूडेंट्स को पैसेज समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो अप्रोचेस टू आरसी अगर फंडामेंटली फ्लॉड होगा तो फिर नहीं आएगा, आफ्टर रीडिंग ऑल्सो, आफ्टर कॉम्प्रहेंशन ऑल्सो। द एफर्ट बीइंग पुट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में तो एफर्ट डालो। अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, लाइक अहमद आस्क्ड मी, सो यस वी आर, आई एम टॉकिंग अबाउट IPMAT 22, पूरा साल है अपने पास, अगर आज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई सजेस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे एंड पिक अप योर आरसी एटलीस्ट आफ्टर अ मंथ। डोंट पिक अप एनी आरसी टू सॉल्व, just keep reading every day, same time, good amount of reading, at least 45 minutes, at least 45 minutes reading every day। एक महीने तक तो एक भी पैसेज उठाना ही नहीं है, फिर देखते हैं। then referring to material that is not helping in any way, again I told you, you go to the internet, start typing IPMAT RCs, PDFs, मिलते जाएंगे सारे। आपको पता है कि उनमें जो आंसर्स हैं वो सही हैं? आपको पता है कि उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो सही हैं? क्या वो एक्चुअली ओरिजिनल पेपर्स हैं? तो मटेरियल जो है वो भी तो सही होना चाहिए। फिर कुछ कहते हैं सर कि ऑनलाइन आ रहा है तब तो ऑफलाइन तो हम पढ़ते नहीं। अरे ऑफलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? अगर बुक्स सही हैं तो थोड़े दिन ऑफलाइन पढ़ लो, क्लोजर टू एग्जाम 4-5 महीने पहले फिर ऑनलाइन पढ़ लेना। दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं ना, मॉक्स नहीं देना। So there is a lot of lot to look into that what material you're picking up. Okay. Now, the psychological fact that they are losing their confidence at the end of every mock is further exacerbating their weaknesses. What are we talking about? We're talking about students, yes. So, mock देने से पहले क्या preparation रहेगी? RCs का क्या preparation रहेगा? देखो, if you're looking for IPMAT 22, though we have a lot of time, okay, which is like दिख रहा है, factually बहुत सारा time है, पर एक बार सोच के देखो, अगर अपने पुराने तरीकों को सही करने की कोशिश की जाए तो हमारे पास हमेशा हमेशा इनफ टाइम होता है। फॉर सो लॉन्ग आई वाज नॉट ओपनिंग अप फॉर टीचिंग ऑनलाइन, बट देन आई एम अ टीचर, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर इज नो अदर मीडियम,
I mend my old ways and I started teaching online because कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज़रूरत है, कहीं ना कहीं टीचर है जिसको अपनी बात पहुंचानी है, तो जब तरीका है तो चलते हैं ना, बढ़ जाते हैं आगे. So I fought with my old ways. You have to again mend your old ways. तो जो भी तरीके हमारे थे पहले, अगर वो सही नहीं है तो उन्हें करेक्ट हम क्यों नहीं करेंगे? But for that you need a right mentor to be connected to, right? So these are 5 mistakes, and if you keep, you would like to talk about all these more. You would like to solve few passages. You would like to stay connected with me for my, new batch, upcoming batch, which I'm starting from 1st of August. Yes, all the details will be given on my Telegram group. I'm starting a batch on YouTube, which is going to be absolutely free. Every day there'll be a session of VARC for IPMAT 22. It's going to be for beginners. It's going to be right from ABCD will start. And I'll finish it off in not less than, not more than 3 months. And the entire course will be finished of VARC, right? So stay connected with me and you can, for all that information, you can come on my Telegram group. This is my Telegram group. Hey, Aman, hello. And at the same time, you can pick up Unacademy Subscription as well, which is talking about a lot of features. The best, which I say, that you have access to notes from all educators at one place. इधर उधर जाके देखने की कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना? अमन लेट तो हो गया, एक सेकंड जरा बात कर ली जाए. अमन, you were not there in my vocab session yesterday. आज डांट पड़ेगी क्लास में. पहुंचो शाम को 5 o'clock. चलिए. So my suggestion is to go for long term, guys. That's going to be cost effective for you. Look at the fees. It's like, you can't even imagine this low. And then you can, you can get 10% additional discount as well if you use my code, which is GSMBA, right? भूल गया था, भूलने का होता है कुछ. So before I sign off, guys, I would like to tell you just one thing. अभी समय है और efforts के बिना success मिलती नहीं है. गलती से अगर मिल गई तो शायद दोबारा नहीं मिलेगी, और अगर 3 बार 4 बार मिल गई तो हम बहुत अनफॉर्चुनेट होंगे. अगर एफर्ट्स के बिना मिल गई तो, क्योंकि फिर आदत हो जाएगी एफर्ट्स के बिना सक्सेस की, और ऐसी आदत ठीक नहीं, क्योंकि 1 या 2 बार या 3 बार शायद मिल जाए तो फिर उसके बाद नहीं मिलेगी. तो इनफैक्ट अगर इस तरह का एक्सेप्शन भी ज़िंदगी में ऑप्शन मिले तो मत चूज़ करना. चूज़ द ऑप्शन वेयर इन योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एंड गेट इट विद लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड सोचने से तो वैसे भी नहीं मिलती, है ना? तो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. मंजिल को पाने के लिए चलना ज़रूरी होता है. That's all from my side, guys. It's a beautiful day today. Keep working hard. Keep giving lots and lots of hard work. And trust me, कोई की भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती. No, never. That's from my experience, I'm telling you. Chalo, see you very soon. I'm starting a new batch on YouTube, this channel. Subscribe this, crack management exams, and do share the video with your friends also. They can start with me on this same channel, VARC preparation. Do comment any general question you have in mind. ठीक है? जो भी question हो उसे comments में डाल दो. And do like the video, right? Thank you very much. Bye.